Namaskar to all. I think people are joining. No one is one. Namaskar to all. Am I audible to everyone? If I am audible, please mention it. Okay, so meanwhile, I'll start my introduction. I'm Chef Kuldeep, Assistant Principal of JP Hotel Training Center. This is a college of JP Hotels and Resorts, which is in Agra. Okay, now come to my ingredients. I'll show you ingredient first. We have cheese over here, we have oil, we have chopped garlic, we have chili flakes, black pepper, oregano, curry powder, salt, refined flour and Amul butter, and same here Amul cheese. I am very much thankful to Amul, who has given me the opportunity to showcase my culinary skills in front of you, and I am thankful to my company JP Hotels and Resorts, and my sincere thanks to my VP Vice President Operation Mr. Harish Kumar and senior management of JP Hotels and my learning and development team of JP Hotel Training Center. During current time, everyone is cooking at home. So what I think, the recipe what I am bringing here, that is fusilli Alfredo, right? Alfredo is a sauce which is from Italian cuisine. Alfredo generally made up of only cream and Parmesan cheese. तो जनरली हमारे घर में क्या होता है, पार्मेजान चीज जनरली अवेलेबल नहीं होता है. सो हियर हम लोग क्या यूज करेंगे, अमूल चीज, जो कि मैं तो खैर बचपन से अमूल चीज खाता आ रहा हूँ और अमूल के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, चाहे वो मिल्क हो, चाहे कर्ड हो, चाहे क्रीम हो. सो आई थिंक अमूल ऑल्सो ब्लेंड वेरी गुड विद द टेस्ट. हियर आई विल शो यू टू मेक व्हाइट सॉस, बेचामेल सॉस, सो दैट बेचामेल सॉस इज अ मदर बेसिक सॉस. इसके जरिए आप बहुत सारे सॉस बना सकते हैं. हाउस वाइफ से कोई भी हो, एक बार बेचामेल सॉस और टमाटो सॉस सीख जाएंगे तो यू कैन क्रिएट 1000 काइंड ऑफ सॉस. तो सबसे पहले हम आपको व्हाइट सॉस भी सिखाएंगे. तो अब जो आपका सॉस है अल्फ्रेडो, आई विल मेक अल्फ्रेडो विद द बेस ऑफ बेचामेल और व्हाइट सॉस, राइट? सो फॉर व्हाइट सॉस, वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, दैट इज 1:1:10. मैं एक आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जो कि आप हमेशा याद रखें. 1:1:10. 1 is butter, 1 is flour and 10 portion is milk, right? हम culinary terms में एक यूज करते हैं, that is roux. roux is what? Actually roux होता क्या है? It's a thickening agent, right? जैसे हमारा thickening agent कॉर्नफ्लावर है, बहुत सारी चीजें थी. roux हम culinary term में यूज करते हैं. roux actually है क्या? That is equal quantity of butter and flour cooked together. That is called roux. That's why I said 1:1. So 1 part of butter लेंगे हम और 1 part of flour लेंगे. For example, I'll take 1 tablespoon of butter, Amul butter, and 1 tablespoon of refined flour, and I'll make roux first. Then I'll add milk. That is the 10 part of the recipe. Okay, so 1:1:10. So I'll make bechamel in 1 part, and another part I start boiling or blanching pasta. देखिए मैं आपको बता दूं, ये हमारा फ्यूजली पास्ता है. इसी की एक और फॉर्म आती है, दैट इज नोन एज स्पाइरली. ओके, पास्ता बॉईल करने के लिए सबसे पहले हम पानी को बॉईल कर लेंगे. ऐसा नहीं कि जनरली हमने देखा है कि कोल्ड वाटर में लोग स्टार्ट कर देते हैं, बट नो, उससे क्या होगा, दैट बिकम्स लंपी और बिकम वेरी सॉफ्ट. द वेरी गुड क्वालिटी of pasta is that it should be al dente. Al dente is what? It's a crisp to bite or firm to tooth, right? मैंने पानी उबालने रख दिया है. इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगा. देखिए मुझे ग्लव्स मैंने पहना हुआ है बिकॉज नाउ डेज
you people know about कोरोना वायरस. सो सबसे पहले आप सैनिटाइज करेंगे हैंड, जो कि मैं कर चुका हूँ सैनिटाइजर के थ्रू, और मैंने ग्लव्स पहना है फॉर दिस. जनरली व्हाइल वर्किंग इन हॉट किचन वी अवॉइड ग्लव्स. मैंने पास्ता पानी में सॉल्ट डाला एंड आई एम एडिंग 2 स्पून ऑफ ऑयल. नॉर्मल ऑयल, नो नीड टू ऐड ऑलिव ऑयल, राइट, एज इट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो. विल वेट जब तक ये पानी बॉयल नहीं होता, तब तक हम वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग रू, राइट. पहले हम पानी उबलने का इंतजार कर लेते हैं. इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम आपका बेसामल सॉस बनाएंगे और रू बनाएंगे. इस बीच में आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क, यू कैन स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन. आई थिंक व्यूअर आर देयर, पीपल हैज जॉइंड. One person is asking that what are you preparing? The recipe I told you, that is fusilli alfredo with a hint of curry powder, right. curry powder मैंने बनाया है. curry powder is nothing. generally curry powder में हम थोड़ा टर्मरिक डालेंगे, थोड़ा कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, थोड़ा ब्लैक पेपर, थोड़ा आपका रेड चिली पाउडर. so it becomes curry powder. you can make at home also. मैंने क्यों बोला है with a hint of curry powder? because it gives us some Indian touch, right. So we start making roux first. Cheese. I'll take butter, Amul butter, which is always my favorite. 1 tablespoon of butter. वैसे तो मैं रेसिपी इसकी पोस्ट करूंगा. You can see the recipe also. देखिए, जनरली द रेसिपी सेज 1:1, राइट. लेकिन आई एम गिविंग यू 1 स्मॉल नुस्खा कह सकते हैं, अमूल का नुस्खा. जनरली जब हम कभी भी बटर मेल्ट करते हैं तो हम थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड कर देते हैं. यू नो द रीजन, बिकॉज so that to avoid burning of butter. बटर क्या होता है, बहुत जल्दी जलता है. तो हमने क्या किया, बटर में ½ टीस्पून और 1 टीस्पून ऑफ बटर में आपने ऑयल ऐड कर दिया टू, सो दैट वी कैन अवॉइड बर्निंग ऑफ बटर. नाउ आई सेड इक्वल क्वांटिटी, राइट. सो द सेम विल गो 1 tablespoon of butter, refined flour. Now gonna to cook it. See again, if we see in culinary terms, we have 3 kind of roux: white roux, blonde roux, and brown roux. As we are making white sauce here, so I'll make white roux here. We will cook a bit so that जब हम सॉस खाएं तो उसमें फ्लावर का फ्लेवर ना आए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपका फ्लावर का कुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट हमें ज्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है, अदरवाइज इट विल बिकम अ डिफरेंट roux. Now, as for recipe, I told you 1:1:10. The 10 part of milk I am going to add. See, मैं आपको एक अगेन ट्रिक बता रहा हूँ, which can be called a किचन का नुस्खा और सेफ टिप्स. देखिए, आपका जो रू है that is very hot, right? Now I am going to add cold milk, not hot milk. Now slowly. So आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें कोल्ड मिल्क क्यों डाला. द रीजन बीइंग टू अवॉइड द लम्प्स, राइट. यू कैन यूज वायर विस्क. देखिए, दिस इज very important
कि one part of the thing your should be hot and another should be cold. आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल भी lumps नहीं है, otherwise आप lumps पड़ जाते. You have to strain it, and again the consistency of sauce depends on you, right? You can see there is no at a single lump. Just why there is no lump? Because one part is hot and another part is cold. You can do another way also. You can make milk hot and your roux cold, right? अगर आप दोनों चीजें गर्म डालोगे तो क्या होगा, इसमें बड़े बड़े लम्प्स पड़ जाएंगे, और दोनों चीजें ठंडी डालोगे तो you will get lumps. You can cook it more. I am not seasoning it. I will season it later on. We can use Amul cream, which enhance the taste of sauce. मैंने देखा अमूल always either it is a butter help in enhancing the taste. Cooking is very important, right? Simultaneously we will see whether हमारा पानी इसमें boil हो गया है या नहीं. I have added salt and oil already. आपका ये sauce ready है. पानी बॉयल हो रहा है. I'll change this is more. Pasta, 200 gram of pasta I am adding to the water. If you have any question, please keep on typing. I can answer. The most important part of cooking is, if अगर आप दिल से बना रहे हो तो of course का टेस्ट बहुत अच्छा होगा. अगर जबरदस्ती बना रहे हो, forcefully बना रहे हो, तो कभी भी, that is my personal experience, you won't get the taste, right? Whatever you are doing, do it with dil se, right? With the passion. Keep on asking the questions, please. जनरली व्हाइट सॉस क्या होता है, थोड़ा ब्लैंड होता है, राइट? तो ब्लैंड को अवॉइड करने के लिए आई लाइक गार्लिक, चॉप गार्लिक, एंड either you can add black pepper or chili flakes, it's up to you. So I'll go for black pepper. And if you talk about the herbs, Italian loves basil, right? We go for fresh basil. लेकिन हमारे पास अभी fresh basil है नहीं, तो I'll go for dry one. Chef, someone is asking, how can you measure how much pasta per person? See, I am taking 200 gram of pasta, right? That serves 4 people. If you are taking 100 gram of pasta, it serves 2 people. Again, we are serving it as a main course, so we will increase the portion size. It goes well with the garlic bread, any kind of bread as per your choice. See, जनरली देखिए ये व्हाइट सॉस रखा है, मैंने अपने culinary स्कूल में पढ़ा था, और इट्स अगेन अ टिप कि व्हाइट सॉस बनने के बाद हम जनरली वी ऐड बटर ऑन द टॉप, राइट? And one viewer asking, can we add onion in white sauce? Yes, you can go for onion also. Onion, if you want to add vegetables, you can add vegetables also. Here I will make with the green peas. Can we use 1 cup? The one person is also there asking one question. Can we use 1 cup milk in the white sauce ratio? 1 cup milk again. If you are using, if I told you 1:1:10, right? If 10 gram of butter,
and 10 gram of flour is there, then 100 ml of milk should be there. So you can measure it. So the ratio goes always 1:10. Shiv Leela is asking how much water is used to boil the pasta. If I am taking 200 gram of pasta, so we will use 500 ml of water to just cover it. And again, remember, we never throw pasta water. We always use pasta water while diluting our sauce because it gives flavor to the sauce. It enhances because we have starch of pasta into the water and salt, of course. As we are doing vegetarian recipes, few people love to have with the bacon, with the ham, with the chicken. Alfredo goes with the many variations. Any other questions? Yeah, Sharad Purnima is asking white sauce कैसे बनाई? White sauce is very simple. Again, I am telling you, make roux first. 1 part of butter, for example, आपने 1 tablespoon butter मेल्ट किया, उसमें 1 tablespoon refined flour डाला, उसको properly cook किया. Then we add 10 part of milk, and we cook it nicely, and it becomes your white sauce. We can add nutmeg also for flavor. अगर आप authentic recipe में जाएंगे तो generally what we do, we boil the milk with the onion and bay leaf. But here we don't require because I am making it Alfredo, so I think I am taking it as a base. See, let me tell you, you have to take out one pasta and you have to check whether it is cooked or not. No, it's raw. Again, the cooking time of pasta depends on the quality of the pasta. If you have any doubt, you can ask me the questions, please. I am here to solve your questions. Sanjay is asking how long do we cook the pasta, chef? See, if you ask me the standard pasta, which is of a good quality, it goes to 5 to 8 minutes. And again, it depends on the quality of the pasta, the durum wheat which is made up of. And best way to check always physically whether it is cooked or not. I always go this way. Yes. It should be al dente, means warm to tooth, crisp to white. We are not going to cook it completely, let me tell you, because Italians don't like complete cooked pasta. Now I am going to drain it. Generally मैंने देखा है कि बहुत से in India we add oil into it to avoid the sticking of pasta. But if we go Italian way, we never add oil into the pasta. आपका cook है, then we start tossing. Right. Now I'll make I start making curry. I'll add 1 teaspoon of oil into it. One person is asking that how many minutes do you boil the pasta to get it dante? See, again I am telling you, it goes to 5 to 8 minutes. It depends on the quality of pasta. The best way to check the pasta, you take it out and see whether it is cooked or not. Because from 95% or 90% your pasta should be cooked. It should be farm to tooth. पूरा completely cooked नहीं होना चाहिए.
देखिए जनरली क्या होता है कि अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग जाते हैं तो समटाइम्स यू फाइंड कि पास्ता अनकुक्ड है और हम ड्रेन कर देते हैं, तो द बेस्ट वे टेक इट आउट एंड ईट इट एंड चेक वेदर इट इज अप टू द मार्क और नॉट. नाउ आई विल ऐड garlic, 1 teaspoon of garlic, One person is asking, can we add chicken if you want to add Yes. it? How can we add it? see again I am telling you, chicken you can take out the strips of chicken breast and जैसे मैंने अभी garlic डाला है, you can add those strips of chicken into it and saute it, right? Then you can add into the pasta, toss it with the pasta. The same goes with every kind of meat. अब जैसे मैंने garlic डाला, I want to add a bit of black pepper. मैं अल्फ्रेडो जो बना रहा हूँ वो ग्रीन पीस के साथ बना रहा हूँ, तो I'll add 4 tablespoons of green peas. You can make with any kind of vegetable. Italian people generally from Naples, Napoli people loves with the green peas and prosciutto cotto, means Parma ham. But generally I am making here a vegetarian recipe. If you want to add chili flakes, because I have seen the people love chili flakes, I'll add half teaspoon of curry powder, right? That is with a hint of curry powder. You can add 1 cube of butter also. Amul butter, that is always my favorite. सभी से तो फेवरेट हुआ है. Keep cooking. Always remember, जब भी आप कुक करते हो, you need to have a patience. जल्दी जल्दी कुक करोगे, you won't get the taste. जब अच्छी तरीके से ये सौते हो जाएगा, कुक हो जाएगा, then I'll add pasta into it. I'll add pasta. And I'll start tossing it. A bit small. Now I'll take my pasta. It becomes always, जब आप white sauce को रख दोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा thick हो जाएगा. I have pasta water, so I can use pasta water. I told you pasta water is very important to enhance the flavor. It gives more flavor to the pasta. Keep on stirring. आप देख रहे हैं बिल्कुल भी थोड़ा भी लम्प नहीं है. I have my own YouTube channel सिर्फ कुलदीप के नाम से. आपको अगर कोई भी रेसिपी या you need to learn something, you can go there. I have my own page, that is Culinary Food Concept and Culinary Arts Facebook page. I'm on Insta also. I keep on posting the different videos over there. We have our own page, JP Hotel Training Center, where we keep posting different kind of food what we prepare in the institute. We have JSTC Instagram page also. Now I'm not using the complete sauce. I'll keep some sauce later on. Now I'll
add my tossed pasta into it. You can toss it. अब देख रहे हैं इसमें करी पाउडर की वजह से you will get more flavor and of course the color also is there. Right. Salt मैंने अभी डाला नहीं है. I'll add salt into it. आपका पास्ता अल दंते होना चाहिए, बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए. Right. I'll add cream also to give it final touch. देख रहे हैं आप, it looks yummy. If you love spicy, then you can add. We have chili flakes also. If you want to make it more spicy, you can add chili flakes also. I'll add salt. Again, salt as per your taste. पास्ता वाटर में सॉल्ट का डालना बहुत जरूरी है, so that जो आप पास्ता बॉईल कर रहे हैं वो उसके अंदर चला जाए. ओके, आपका पास्ता एकदम रेडी है. मैंने करी पाउडर से इमल्सन भी बनाया है, so you can top it with emulsion of curry powder a bit. I'll put it on the garnish as well. Right, it gives taste and flavor to the pasta. The most important thing, pasta should be very hot. एक चीज रह गई है, आप लोग सोच रहे होंगे अभी मैंने इसमें क्या नहीं डाला है, जो सभी पसंद करते हैं, क्या? That is Amul cheese. Right, everyone loves cheese. So you can load it with the cheese. मैंने थोड़े थोड़े अमूल के क्यूब्स भी काटे हैं. So when you eat it, the cubes of cheese melt and comes into the mouth. Chef Sudha is asking, do you add vegetables to the sauce or do we saute it separately and add? See, जब हमने ग्रीन पीस को टॉस किया था सुधा, तभी आप वेजिटेबल्स डालकर उसमें टॉस कर सकती है. जैसे ब्रोकली हो गया, बेबी कॉर्न हो गया, any kind of vegetable you can toss it. Then you can add into the sauce. Toss it always with the garlic, right, and butter. मेरे पास ये अमूल के चीज हैं. वैसे तो मैंने क्यूब्स डाल दिए हैं इसमें, but even then I love to grate it. Chef Sanjay is asking, what other vegetables goes good with your special fusion pasta Alfredo? Green peas, of course, I have added green peas, and if you want to add broccoli, it also goes well. Can I have grater, please? I'm going to serve it. Chef Bhaskar is asking, can we use mushroom in Alfredo pasta? Yes, of course. You can add mushroom also. Again, Sudha is asking, can we add zucchini and broccoli? Yes, broccoli you have to toss it first. Now you cannot add anything. Now it's ready. You can grate cheese now on the top. Right. Now I'll add emulsion also. See, this emulsion enhances the taste of pasta. It gives Indian touch to the pasta. Chef Shraddha is asking, can we use white flour instead of maida? I'll prefer to go for refined flour. You can use whole flour also, but it's better if you go to refined flour for the better result. Okay, now I have dry basil.
I'll suggest if you have the fresh basil, you go for it. And your pasta is complete. This is your fusilli alfredo with a hint of curry powder. If you have any doubt, you can ask me. And it looks yummy. आप घर पर जरूर बनाएं। सारे इंग्रेडिएंट्स वो लिए हैं मैंने जो घर पर इजीली अवेलेबल है। Instead of parmesan, I am using Amul cheese. Right? I have taken the base of bechamel, white sauce. This is another learning because you can create different kind of sauce out of bechamel. Any doubt if you can? I think one person wanted a quick recap of the what you made. Okay. It's very simple. एक साइड में आप पास्ता बॉईल करने रख दीजिए, दूसरे साइड में आप व्हाइट सॉस बनाइए। व्हाइट सॉस के लिए आपको रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1:1:10। 1 स्पून आपकी टेबल स्पून बटर है तो 1 टेबल स्पून आपका फ्लावर होगा और 10 गुना उसका मिल्क होगा। रू कुक कर लीजिए, बटर में फ्लावर डालिए, उसको कुक कीजिए अच्छी तरीके से, देन उसमें मिल्क डालिए। Always remember, if one thing is hot, another should be cold. Like if your roux is hot, your milk should be cold. Then you will not get any kind of lump. Otherwise, you have to do double job. उसको आप फिर strain करोगे, फिर निकालोगे. So the best way, what I have used, one part is cold and another part is hot. So you won't get any lump. So here your bechamel is ready. Another hand your pasta blanched already. You drain it, take garlic, saute it, add curry powder to it and green peas, toss it. Vegetables up to you. You can add any kind of vegetable. Then add pasta, white sauce and toss the pasta. Chef Asha is asking, please repeat your FB page name. Culinary Food Concept by Chef KDP. Culinary Arts, and we have JP Hotel Training Center page. I have my own YouTube channel जो कि Chef कुलदीप के नाम से है, and I am on Insta also. So you can put up your queries over there. I'll solve it. If you have any doubt, you can comment over there. I'll come up with the different recipes. Lalita is asking how you made curry powder. करी पाउडर वैसे तो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप मद्रास करी पाउडर जाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन यू कैन मेक, आप इसमें हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टेकिंग 1 टीस्पून ऑफ करी पाउडर मींस हल्दी टर्मरिक पाउडर, देन हाफ टीस्पून ऑफ कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर पाउडर, हाफ टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर एंड ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, योर करी पाउडर इज done. I think all doubts are clear. So you can serve it to the guest. Which Parmesan cheese can be used, chef? Parmigiana Reggiano is the best. I think my Malti is asking, please spell your page name. that is Culinary Food Concept by Chef KDP. We have JP Hotel Training Center page as well. I think I'm clear with all doubts. So enjoy your pasta. I'm giving it to the guest because pasta ठंडा कभी अच्छा नहीं लगता है और pasta should be hot. So you can make and enjoy pasta. Thank you so much. Enjoy your pasta and have a good day. Stay safe. Stay home.